नेक्स्ट रिलेशनशिप हमारा इंडिया और फ्रांस के साथ है। नेक्स्ट रिलेशनशिप इंडिया, आईआर में नेक्स्ट रिलेशन पढ़ेंगे इंडिया और फ्रांस का। इंडिया फ्रांस इकोनॉमिक रिलेशनशिप, बायलेटरल ट्रेड है ओवर $13 बिलियन। बायलेटरल ट्रेड ओवर $13 बिलियन। ट्रेड सरप्लस $1.84 बिलियन। एफडीआई फ्लो ओवर $10.49 बिलियन। ट्रेड है फोकस ऑन सेक्टर लाइक्स ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड आईटी। डिफेंस एंड मिलिट्री पार्टनरशिप एक्सरसाइज है शक्ति आर्मी के लिए, वरुण नेवी के लिए, गरुण एयरफोर्स के लिए। डिफेंस, फ्रांस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट टू इंडिया। फ्रांस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट टू इंडिया। P-75 Scorpions technology transferred and Rafale aircraft helped India's accessions to Missile Technology Control Regime (MTCR), Missile Technology Control Regime, Wassenaar Arrangement (WA), Australia Group (AG), Strategic Cooperation, Nuclear Cooperation, Civil Nuclear Cooperation Agreement, setting up of nuclear reactor in India with France assistance, collaborative efforts in nuclear safety and research, investment, major foreign investors in India, science and technology में cooperation, training projects for India's Gaganyaan, human space flight program, इसरो CNES कोलाबोरेशन, इसरो और CNES का कोलाबोरेशन के पार्टनर्स इन लॉन्चिंग इंडियन सैटेलाइट्स। नेक्स्ट है कल्चरल रिलेशन में लिखेंगे फेस्टिवल्स, इंडिया फ्रांस कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। कल्चरल रिलेशन इंडिया फ्रांस, इंडिया फेस्टिवल पहले सब टॉपिक डालेंगे, फिर लिखेंगे इंडिया फ्रांस कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। नमस्ते फ्रांस फेस्टिवल, बोंजोर इंडिया फेस्टिवल। अलायंसेज में लिखेंगे अलायंस फ्रांचेज नेटवर्क इन इंडिया, इंडियन कल्चरल सेंटर इन पेरिस। कोलाबोरेशन, सिनेमैटिक कोलाबोरेशंस, एजुकेशनल पार्टनरशिप एंड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन में लिखेंगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड्स आर नाउ बीइंग इशूड इन रीयूनियन आइलैंड लोकेटेड इन इंडियन ओशन ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड्स आर नाउ बीइंग इशूड इन रीयूनियन आइलैंड लोकेटेड इन इंडियन ओशन ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। मल्टीलेटरल प्रेजेंस, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, G7, G20, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, काउंसिल ऑफ यूरोप, सेंजन एरिया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। एरिया ऑफ डाइवर्जेंस, ट्रेड इम्बैलेंसेस, लेबर राइट इशूज़। Jodhpur nuclear power project has faced delays and controversies. Overpricing of defense equipments, Rafale, challenges in obtaining visas from France. Recent development marking 25 years of their strategic relations, India and France launched the Horizon 2047 framework. India and France launched the Horizon 2047 framework. नेक्स्ट रिलेशन है इंडिया UK। इकोनॉमिक रिलेशंस, बायलैटरल ट्रेड ओवर $20 बिलियन, ट्रेड सरप्लस $762 मिलियन। FDI फ्लो ओवर $1.2 बिलियन। डिफेंस एंड मिलिट्री पार्टनरशिप में लिखेंगे एक्सरसाइज ट्राई सर्विसेज जॉइंट एक्सरसाइज, कोंकण शक्ति, अजय वॉरियर आर्मी के साथ, कोकर एक्सरसाइज नेवी के साथ, कोबरा वॉरियर, मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज एक्सेट्रा। डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन हुई थी 2015 में। डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन इन 2015।
कल्चरल रिलेशंस में लिखेंगे यूएई हैज़ द हाईएस्ट यूएई नेक्स्ट डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन इन 2015। नेक्स्ट है स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन। स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन हेडिंग में लिखेंगे ट्रेड। ट्रेड सबसे पहले लिखेंगे ब्रेक्जिट ओपन दी अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू साइन ट्रेड डील्स सेपरेटली विद यूएस एंड यूके। ब्रेक्जिट ओपन दी अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू साइन ट्रेड डील्स सेपरेटली with both UAE and UK. Energy India UK Green Growth Equity Fund, India UK Green Growth Equity Fund. डायस्पोरा माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप है। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू फैसिलिटेट ईजी मूवमेंट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स। इंडियन डायस्पोरा फॉर्म 3.1% of the total population of UK, contributes to 6% of the country's GDP of UK. Cultural relations. Nehru Center in the UK has been actively promoting Indian culture. Nehru Center in the UK have been actively promoting Indian culture. 2017 was celebrated as India-UK Year of Culture. Political and diplomatic relations. Common multilateral forums हैं G20, WTO, Commonwealth. India-UK Roadmap 2030 provides a framework for India-UK Roadmap 2030 provides a framework for UK-India relation across health, climate, trade, education, science and technology, and defense. Area of divergence है colonial legacy, British intervention in India's domestic politics, British intervention in India's domestic politics, UK immigration policies, closeness to Pakistan and China, Khalistan movement based out of UK, Khalistan movement based out of UK. Recent developments, India UK 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग. नेक्स्ट रिलेशनशिप है इंडिया और सऊदी अरेबिया का. इंडिया सऊदी अरेबिया इकोनॉमिक रिलेशनशिप. बायलैटरल ट्रेड है ओवर $50 बिलियंस. ट्रेड डेफिसिट ओवर 30 बिलियंस. FDI फ्लो $3.22 बिलियन जून 2023. डिफेंस एंड मिलिट्री पार्टनरशिप एक्सरसाइज हम करते हैं अल मोहेद अल हिंदी. एग्रीमेंट एंड कॉन्फ्रेंस इंडिया सऊदी अरेबिया डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2014. इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस IDEX. जॉइंट कमिटी ऑन डिफेंस कोऑपरेशन 2014. जॉइंट कमिटी ऑन डिफेंस कोऑपरेशन 2014. इंडिया सऊदी अरेबिया डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2014. इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस IDEX. स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप है इंडिया सऊदी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप काउंसिल. ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ हार्ड मिशन. ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन हार्ड मिशन. इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन. ऑयल के सप्लाई क्या कौन सी लाइट? अरे माता से जोड़ा होगा तब तो. ऑयल के सप्लायर्स ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया. के सप्लायर्स ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया एंड बोथ कंट्रीज आर एक्सप्लोरिंग जॉइंट वेंचर्स इन एनर्जी एंड पेट्रोकेमिकल्स. के सप्लायर्स ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया एंड बोथ कंट्रीज आर एक्सप्लोरिंग जॉइंट वेंचर्स इन एनर्जी एंड इन पेट्रोकेमिकल्स. नेक्स्ट है कल्चरल रिलेशनशिप. सऊदी अरेबिया के साथ कल्चरल कल्चरल रिलेशंस इवेंट्स हैं इंडियन कल्चरल वीक शोकेसिंग इंडियन आर्ट म्यूज़िक डांस क्यूजिन्स इन सऊदी अरेबिया. जो इंडियन कल्चरल वीक होता है इसमें शोकेसेस इंडियन आर्ट म्यूज़िक डांस क्यूजिन्स इन सऊदी अरेबिया. Indian films and television shows are popular. In Saudi Arabia. International Day of Yoga is celebrated in Saudi Arabia. Education. India offers scholarship to Saudi students for higher education. India offers scholarship to Saudi students for higher education. Faith. Saudi is home to the holy cities of Makkah and Medina, known for the annual Hajj and Umrah pilgrimage.
सऊदी फेथ में लिखेंगे सऊदी इज़ होम टू द होली सिटीज़ ऑफ मक्का एंड मदीना नोन फॉर द एनुअल हज एंड उम्रा पिलग्रिमेज। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस में लिखेंगे इंडिया सऊदी विजन 2030 पार्टनरशिप 2019। मोर देन 2.4 मिलियन इंडियन एक्सपैट्रिएट्स gainfully employed in Saudi Arabia. Multilateral presence, organizations of Islamic cooperation, G20, Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, Gulf Cooperation Council, Arab League, International Atomic Energy Agency, International Civil Aviation Organization. Areas of divergence है ongoing regional conflict in the Middle East, ongoing regional conflict in the Middle East, complex visa and immigration policies, India's heavy dependence on Saudi oil import। नेक्स्ट रिलेशनशिप है इंडिया और इजराइल का। इकोनॉमिक रिलेशंस में लिखेंगे बायलैटरल ट्रेड ओवर $10 बिलियन, ट्रेड surplus over $6 billion, FDI flow over US 286.15 मिलियन 2000 से 2023 तक। डिफेंस एंड मिलिट्री पार्टनरशिप एक्सरसाइज करते हैं इजराइल के साथ ब्लू फ्लैग इंडिया इजराइल डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट 1993 में हुआ था। डिफेंस प्रोक्यूरमेंट्स एंड कोलाबोरेशंस बराक 8 मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लाइक स्पाइक, हर्मेस ड्रोन्स। India is one of the largest buyer of Israeli defense equipment including drones, radar system, etc. And partnership है हमारी between DRDO and Israel defense companies. Strategic cooperation है de-hyphenation policy, two-state solution at the UN. India voted against the partition plan for Palestine and Israel admission to the UN. At the United Nations, India voted against the partition of plan for Palestine and Israel admission to the United Nations. Strategic partnership 2017 में हमारी इजराइल के साथ हुई थी, फोकसिंग ऑन डिफेंस, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी। कल्चरल रिलेशनशिप है इजराइल के साथ। कल्चरल फेस्टिवल्स लाइक इंडिया वीक showcases Indian art, music, dance, cuisines in Israel. A significant Indian Jewish community known as the Bene Israel contributes to cultural ties and maintains traditional Indian customs and festivals in Israel. Political and diplomatic relations में लिखेंगे visits, frequent high-level visits. Indian Prime Minister Narendra Modi historic visit to Israel in 2017. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's visit to India in 2018. Active cultural diplomacy through cultural festivals, academic collaborations. Area of divergence, India's relation with Middle Eastern countries, particularly Iran and the Arab state. India's need to maintain strong relations with both Israel and the Palestinian Authority. नेक्स्ट रिलेशन है इंडिया एंड साउथ कोरिया। इकोनॉमिक रिलेशंस बायलैटरल ट्रेड ओवर $20.43 बिलियंस जनवरी से अक्टूबर 2023 के बीच में। ट्रेड डेफिसिट अराउंड $9.2 बिलियन। FDI फ्लो $4.97 बिलियन बिटवीन अप्रैल 2000 से जून 2021 तक। डिफेंस एंड मिलिट्री पार्टनरशिप में लिखेंगे एक्सरसाइज हमारी कोरिया के साथ सहयोग हियोबेलियोंग शक्ति जॉइंट रिसर्च एंड प्रोडक्शन लाइक K9 वज्र आर्टिलरी गन। इंडिया हैज़ 2+2 डायलॉग सिंस 2019. ट्रेड साइंड द comprehensive economic partnership agreement to enhance trade and economic cooperation. Strategic cooperations, सबसे पहले strategic cooperation में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। साउथ कोरियन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडियन स्टार्टअप्स एंड टेक्नोलॉजी फर्म्स सपोर्ट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. South Korean investments in Indian startups
and technology firms support innovation and entrepreneurship. India-Korea Strategic Partnership Framework, enhancing bilateral trade, defense collaborations, technological innovation, and regional security. India-Korea Industrial Cooperation Partnership, numerous student exchange program, cultural relations. Princess Suri Ratna married King Kim Suro. कल्चरल रिलेशनशिप में प्रिंसेस सूरी रत्ना मैरिड किंग किम सूरो. बुद्धिज्म played a significant role in shaping Korean culture and religious practices. Political and diplomatic relations. Visits, regular summits and meetings between leaders. Recent visit by President Yoon in 2022. Active in ARF EAS. Focus on regional security and economic stability. Area of divergence है impact of North Korean tension on diplomatic relations. Impact of North Korean tension on diplomatic relations. Challenges related to sustainability and climate change initiatives. Gaps in technology transfer and access to advanced technologies. Next relationship इंडिया और अफ्रीका की. इकोनॉमिक रिलेशनशिप, बायलैटरल ट्रेड अप्रॉक्सीमेटली $98 बिलियन, ट्रेड सरप्लस अप्रॉक्सीमेटली $4.55 बिलियन, FDI फ्लो $73.9 बिलियन बिटवीन 1996 to 2022 टू अफ्रीका फ्रॉम इंडिया से अफ्रीका के लिए इतना FDI फ्लो हुआ है. डिफेंस एंड मिलिट्री पार्टनरशिप एक्सरसाइज एफ इंडेक्स माने अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज. समिट्स एंड प्रोग्राम, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग, इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टीरियल कॉन्क्लेव, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट. उसके बाद है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ITEC प्रोग्राम. नेक्स्ट है स्ट्रेटजिक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन में लिखेंगे सागर इनिशिएटिव, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर फॉर इन्हांसिंग कनेक्टिविटी इनिशिएटिव बाय एक्सिम बैंक. कल्चरल रिलेशन, कल्चरल फेस्टिवल्स, इंडिया डे शोकेस इंडियन म्यूजिक आर्ट एंड डांस. पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ह्यूमैनिटेरियन एड 10 गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडिया अफ्रीका इंगेजमेंट as outlined by Prime Minister. India support African nation by training their peacekeepers and providing equipment for peacekeeping operation. India supports African nation by training their peacekeepers and providing equipment for peacekeeping operations. BRICS, South Africa, Egypt, Ethiopia are members. South Africa, Egypt, Ethiopia are members of BRICS. Area of divergence, China factor, slow project delivery by India, especially in comparison to China. Chinese military base Djibouti में, increasing defense bases, numerous case of violence against African student in India, lack of synchronizations between LOC line of credits, ग्रांट्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स में सबसे पहले पढ़ेंगे आशियान क्या है. आशियान्स रिप्रेजेंट 8.7% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड अ कंबाइंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP ऑफ अराउंड $3.2 ट्रिलियन. मेंबर्स हैं इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया. डायलॉग पार्टनर्स ऑफ आसियान कौन है. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया भी है, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, रशिया, यूनाइटेड स्टेट. ईयर 2022 मार्क्स द 30th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया आसियान पार्टनरशिप. 2022 इंडिया और आसियान पार्टनरशिप का 30वीं एनिवर्सरी थी.
ASEAN India Trade in Goods Agreement AITIGA was implemented in 2010. Merchandise trade between India and ASEAN countries rose to $131.57 billion during the period of 2022 to 2023. Next grouping है G7. It is an informal grouping of the world's 7 advanced economies. It is an informal groupings of the world's 7 advanced economies. Members हैं Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom and United States. Russia joined as a member in 1998, creating G8. However, was expelled post its invasion of Crimea in 2014. It comprises the 1/10 of the world population and 46% of the global GDP. Key initiatives of G7: Financial Action Task Force, Global Fund to fight malaria and AIDS, Global Apollo Program to tackle climate change, Global Apollo Program to tackle climate change, Global Minimum Corporate Tax, Build Back Better World, Partnership for Global Infrastructure and Investment, G20. Next grouping है G20. The G20 members represent around 85% of the global GDP, over 75% of the global trade, and the 2/3 of the world population. Members हैं Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Republic of Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, United Kingdom, United States, and European Union. India took over as the presidency of G20 in 2023 from Indonesia. The theme of India's presidency, Vasudhaiva Kutumbakam, on One Earth, One Family, One Future. One Earth, One Family, One Future. Black Sea Grain Initiative, broken by Turkey and the UN during the 20th summit in Bali. It allowed for the export of goods items and fertilizers from Russia and Ukraine. Key initiatives of G20. Financial Stability Board make recommendation about the global financial system. जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है make recommendations about the global financial system. Quality Infrastructure Investment, QII, promote sustainable and resilient infrastructure. Global Forum on Steel Access Capacity, G20 Digital Economy Task Force. Next grouping है EU, European Union. It is a political and economic alliance of 27 primarily European countries which came into force after signing the Maastricht Treaty. MAASTRICHT Treaty. It represents 5.8% of the global population, approximately 1/6 of global nominal GDP, and the third highest global economy after the United States and China. European Union undertakes various initiatives to promote economic growth and social inclusion, environmental sustainability, and global cooperation. Key initiatives of European Union: Green Deal, transform the European Union into a climate neutral continent by 2050. Common Agricultural Policy, support farmers, ensure food security, and promote sustainable agriculture. Horizon Europe, promote research and innovation. Security and defense में लिखेंगे enhance the European Union security and defense capabilities. Next grouping है BRICS. It was formalized as BRIC, Brazil, Russia, India, China in 2006. The first BRIC summit was held in Ekaterinburg, Russia in 2009. The BRIC group was renamed as BRICS: Brazil, Russia, India, China, South Africa, after South Africa was accepted as a full member in 2010. BRICS bring together 5 major emerging economies comprising 41% of the world population, having 24% of the world GDP and 16% share of world trade. Key initiatives of BRICS: New Development Bank (NBD), Contingent Reserve Arrangement (CRA), BRICS Business Council, BRICS Partnership on New Industrial Revolution (PART NIR), BRICS Women's Business Alliance. फिर से पढ़ देती हूँ कि इनिशिएटिव्स ऑफ ब्रिक्स: न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल,
ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ब्रिक्स वुमेंस बिजनेस अलायंस। नेक्स्ट ग्रुपिंग है BIMSTEC, the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation is a regional organization established in 1997 with the signing of the Bangkok Declaration. Members हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका and Thailand. It accounts for 22% of the world population with a combined GDP of $3.7 trillion. Key initiatives of BIMSTEC. बिम्स्टेक का फ्री ट्रेड एरिया, बिम्स्टेक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक स्टडी, बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एमरजेंसी रिस्पॉन्स, बिम्स्टेक कोऑपरेशन इन फिशरीज, बिम्स्टेक पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। के इनिशिएटिव्स ऑफ बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एरिया FTA, बिम्स्टेक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक स्टडी, BITLS, बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एमरजेंसी रिस्पॉन्स, BIMSTEC cooperation in fisheries, BIMSTEC people to people connectivity. Next grouping is SAARC. The South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC, was established in 1985. It has 8 member countries: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. SAARC comprises 3% of the world land area, 21% of the world population and 5.21% $4.47 trillion of the global economy as of 2021. Key initiatives of SAARC. SAARC Development Fund, South Asian Free Trade Agreement SAFTA, South Asian Free Trade Area SAFTA, SAARC Tuberculosis and HIV AIDS Center STAC, SAARC का visa exemption schemes. Issue with Key initiatives of SAARC. SAARC Development Fund, South Asian Free Trade Agreement, SAARC Tuberculosis and HIV AIDS Center, SAARC Visa Exemption Scheme. Issue with SAARC. India Pakistan conflict, trade barrier despite SAFTA, terrorism and insurgency, lack of strong secretariats. Next grouping है SCO, Shanghai Cooperation Organization. The Shanghai Cooperation Organization is an intergovernmental organization founded in 2001. 9 member states हैं चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान and Uzbekistan. The 8 member countries of SCO represent around 42% of the world population and 25% of the global GDP. Key initiatives of SCO: regional security and counter-terrorism, economic cooperation and development, SCO Trade and Economic Development Council, SCO Youth and Education Program, SCO Cultural and Humanitarian Exchange. के initiatives हैं के initiatives of SCO: regional security and counter-terrorism, economic cooperation and development, SCO Trade and Economic Development Council, SCO Youth and Education Program, SCO Cultural and Humanitarian Exchange. नेक्स्ट है सिक्योरिटी में सबसे पहला टॉपिक है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. डाटा एंड फैक्ट्स. ओवरऑल ड्रॉप इन रिसेंट टाइम्स रिड्यूस्ड बाय 76% इन 2022 एज कम्पेयर टू 2010. 2010 की तुलना में 2022 में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में रिड्यूस हुआ है, 76% का रिडक्शन हुआ है. डेथ ऑफ सिविलियंस एंड सिक्योरिटी पर्सनल डिक्लाइन टू 98 इन 2022 फ्रॉम 1005 मरते थे 2010 में. 1005 लोग मरते थे 2010 में. डेथ ऑफ सिविलियन एंड सिक्योरिटी पर्सनल डिक्लाइन टू 98 इन 2022. डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड 45. स्टेट अफेक्टेड छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल. स्टेट अफेक्टेड हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला. impacted 40% of India's territory, 35% of its population. Recent incidents 2023 में अटैक ऑफ पैरा ट्रूपर्स, 2023 में छत्तीसगढ़ अटैक. Schemes and initiatives. National Policy and Action Plan to Address Left-Wing Extremism. National Policy and Action Plan to Address Left-Wing Extremism 2015. समाधान. Security Related Expenditure Scheme,
special central assistance for most left-wing extremism affected district, scheme of fortified police stations, road connectivity projects for left-wing extremism affected area. Institutional setup: CAPF forces placed in the volatile area. CAPF forces placed in the volatile areas. Greyhounds force in Andhra Pradesh. Special infrastructure schemes. Civic aspirational district programs. Civic action program. Tribal youth exchange programs. जन्मभूमि प्रोग्राम इन आंध्र प्रदेश. ये सारे इंस्टीट्यूशनल सेटअप हैं. CAPF फोर्सेज प्लेस्ड इन द वोलाटाइल एरियाज. ग्रे हाउंड्स फोर्स इन आंध्र प्रदेश. स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. सिविक एक्शन प्रोग्राम. ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम. जन्मभूमि प्रोग्राम इन आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट है इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट. Data and facts. Overview. 8% of India's geographical area. Insurgency in Northeast जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट का 8% of India's geographical area. About 4% of the national population. More than 200 ethnic group present. Northeast India shares about 5,500 kilometers of border with 5 countries. भूटान के साथ, नेपाल, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश. This constitutes approximately 60% of India's land borders and more than 90% of northeastern state land borders. Insurgency reduced by 80% in the last 8 years from 2014. Insurgency reduced हुई है by 80% in the last 8 years from 2014. Casualties of security forces went down by 75%. Civilians' deaths were reduced by 99%. Rohingyas. Estimated 40,000 Rohingyas were in India. Illegal migrants. Estimated 24 million illegal Bangladeshis migrants in India. Recent incidents क्या हुए हैं? 2014 में अटैक इन मणिपुर. 2024 में अटैक इन मणिपुर. 2024 में ही नागालैंड में अटैक हुआ. 2023 में जोरहट मिलिट्री स्टेशन ब्लास्ट हुआ था. 2003 में इम्फाल बॉम्ब एक्सप्लोजन. स्कीम एंड इनिशिएटिव. इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या इनिशिएटिव्स और स्कीम बनी हैं? 3rd बोडो पीस अकॉर्ड 2020. बैंड किया है इसने NDFB को, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर बोडोलैंड. Helicopter services in the northeastern state. Resettlement of Bru migrants. ANVC Peace Accord 2014. NLFTSD Peace Agreement 2019. Karbi Peace Accord 2021. Karbi Peace Accord 2021. Ulfa Peace Agreement 2023. Scheme for surrender cum rehabilitation of insurgents in northeastern state. Institutional setup. Special power under ASPA, Armed Forces Special Power Act. ASPA. The Assam Rifles deal with insurgents in Assam. Ministry of Development of Northeastern Region, डोनर जिसे कहते हैं. इनर लाइन परमिट. ये इंस्टीट्यूशनल सेटअप है. स्पेशल पावर्स अंडर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट. The Assam Rifles deal with insurgent in Assam. Ministry of Development of Northeastern Region. Inner line permit. Constitutional provision. Article 244 का clause 1. Article 244 का clause 2. Article 371 का A, 371 का B, 371 का C, 371F, 371G, 371H. Committees. MP बेजबरुआ कमेटी रिपोर्ट. MP बेजबरुआ कमेटी रिपोर्ट. नेक्स्ट है टेररिज्म. डाटा एंड फैक्ट्स. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023. वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री अफगानिस्तान. वर्स्ट अफेक्टेड रीजन साउथ एशिया. 1354 डेथ इन 2022.
deadliest terror group Islamic State and its affiliates. India's rank 13th. Lone wolf attacks rise of 70% from 1970 to 2014. Recent incident 2024 में डोडा अटैक जम्मू कश्मीर में हुआ था. 2024 में बामियान शूटिंग अफगानिस्तान में. 2024 में रियासी अटैक हुआ था. रियासी अटैक 2024 में. 2023 में पुंछ टेरर अटैक. 2023 में पुंछ टेरर अटैक. स्कीम एंड इनिशिएटिव्स काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीज़न. काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीज़न. ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म. ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म GIFCT. इंटीग्रेटेड एक्शन ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज विद फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट. स्ट्रेंथन ऑफ PMLA in 2013 to 2018. Institutional setup NIA. National Investigation Agency Amendment Act 2019. Unlawful Activities Prevention Act. Multi-Agency Center MAC. NetGrid NCFT Cell. Special Tactics Wing STW. National Security Guard. नेक्स्ट है सोशल मीडिया. सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइप्स ऑफ थ्रेट, फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन, डीप फेक्स, कैट फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग, क्लिक जैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट. डाटा एंड फैक्ट्स, यूजर बेस. more than half of the Indians, 759 million citizens are active internet users and access the internet at least once a month. 399 millions are from rural India. 360 millions are from urban area. The active internet base is expected to grow to 900 million by 2025. Digital divide continue to plague the country. Digital divide continue to plague the country. Bihar has 32% internet users. Goa has 70% internet users. Digital payments witnessed 13% growth over 2021. An estimated 338 million users, of which 36% are from rural India. Facts: India is currently the world's second largest telecommunication market. India is currently the world's second largest telecommunication market. Subscriber base of 1.2 billion. Internet penetration, रुक जाओ. Internet penetration 65.89%, 88% for the US, 61% for China. Fake news in 2019, 17 fake news reports were busted by the fact check unit of PIB. In 2019, 17 fake news reports were busted by the fact check unit of PIB, rising to 394 cases busted in 2020. In 2021, 285 instances of fake news were debunked, growing to 338 instances in 2022. Legal provision: IT Act of 2002, amendment in 2000 Act, Section 69 and 69A, relevant section of IPC and CRPC, Information Technology, Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules. 21. Schemes and initiatives, NetGrid, Shut-in, Judicial pronouncements, Shreya Singhal versus Union of India case, Arnab Manoranjan Goswami versus State of Maharashtra. Arnab Manoranjan Goswami versus State of Maharashtra. Next topic है साइबर सिक्योरिटी. नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी. थ्रेट्स ऑफ साइबर थ्रेट. ransomware, RAS, ransomware as a service, cyber espionage, denial of service, DOS, malware, juice jacking, social engineering and phishing, man in the middle, MITM attacks, man in the middle attack, social engineering and phishing, malware, juice jacking, cyber espionage, denial of service, ransomware, RAS, ransomware as a service, SQL injection, cross-site scripting. Data and facts. India's country's financial sector faced more than
17 lakh cyber attacks between January and October 2023, RBI. Cyber crimes in cyberspace cost the global economy around $450 billion a year. Cybercrimes Cybercrime reporting surged by 24.4%, totaling 65,893 cases NCRB 2022. तो साइबर क्राइम्स रिपोर्टिंग सर्ज बाय बढ़ गया है 24.4% से, टोटल में देखेंगे तो 65,893 केसेस NCRB 2022 में बोला. Cyber fraud constituted the majority of cases 64.8%, followed by extortion 5.5% and sexual exploitation 5.2%. The crime rate under this category rose from 3.9% in 2021 to 4.8% in 2022. COVID-19. Cyber crimes have gone up by almost 500% in India during the global pandemic. Global Cyber Security Index for 2020. India is at 10th place globally. ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 10th थी ग्लोबली. Recent incidents. Pegasus. As per claims, at least 1,000 Indian phones numbers are in a list of potential target of surveillance. As per claims, at least 1,000 Indian phone numbers are in a list of potential target of surveillance. 2023 में 17,000 WordPress site hacked. 2024 में ransomware attack in Bengaluru. Legal provision. Information Technology Act 2000, IT Amendment Act 2008. Schemes and initiatives. Cyber Security Policy 2013. Cyber Security Policy 2013. Cyber Surakshit Bharat Initiatives. National Cyber Security Coordination Center and CCC. Cyber Swakshata Kendra. Cyber Swakshata Kendra. Information Security Education and Awareness Project ISEA. Institutional setup. Cyber Appellate Tribunals. CERT in National Critical Information Infrastructure Protection Center. National Critical Information Infrastructure Protection Center and CIIPC. Commission and committees. Gulshan Rai Committee. Justice B.N. Sri Krishna Committee. Gulshan Rai Committee. Justice B.N. Sri Krishna Committee. International cooperations or mechanism. International cooperations or mechanism. The International Telecommunication Union. The International Telecommunication Union's Budapest Convention on Cybercrime. Internet Governance Forum. Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers. तो इंटरनेशनल कॉपरेशन और मैकेनिज्म कौन कौन से हैं? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, इंटरनेट कॉपरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स. मनी लॉन्ड्रिंग. नेक्स्ट टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग. मनी लॉन्ड्रिंग डाटा एंड फैक्ट्स. मनी लॉन्ड्रिंग अकॉर्डिंग टू द IMF the amount of money laundered globally in 1 year is 2 से 5% of global GDP. 2 से 5% of global GDP. That is $800 billions to $2 trillion in current US dollar. Black money. According to studies by the Union government, the size of the country's black money has been estimated as 71 से 79% of GDP during 2009 से 11. Parliamentary panel suggests that it could be anywhere between 7 से 120% of GDP. The Financial Action Task Force reported that some terrorist websites encouraged sympathizers to donate in bitcoins. The Financial Action Task Force reported that some terrorist websites encouraged sympathizers to donate in bitcoins. Legal provisions. Prevention of Money Laundering Amendment Act PMLA 2012. Prevention of Money Laundering Amendment Act PMLA 2012. FEMA Act 1973. The Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act 1974. The Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act 1974. COFPOSA.
The Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Act 1976. The Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Act 1976. Criminal Law Amendment Ordinance 1944. Criminal Law Amendment Ordinance 1944. Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. Narcotropic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. Schemes and initiatives following Basel's Committee recommendations. Following Basel's Committee recommendations, Enforcement Directorate (ED). India is a full-fledged member of the FATF. Demonetization. फिर से पढ़ देती हूँ. Schemes and initiatives following Basel Committee recommendation. Enforcement Directorate. India is a full-fledged member of the FATF. Demonetization. Institutional setup. GSTN GST network. SEBI Security Exchange Board of India. Enforcement Directorate. Central Bureau of Investigation CBI. FIUIND Financial Intelligence Unit India. International Cooperation on Mechanism. India is a member of FATF Financial Action Task Force. OECD. United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988. The Vienna Convention. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000. नेक्स्ट है बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट. बॉर्डर मैनेजमेंट या बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट. डाटा एंड फैक्ट्स. लैंड बॉर्डर. इंडिया हैज़ 15,106.7 किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर. शेयर्स बॉर्डर विद 7 कंट्रीज. बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान. कोस्टल बॉर्डर. द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग island territories with a diverse range of topography. Poor border infrastructure. Only 22 roads out of allotted 73 roads completed. Only 22 roads out of allotted 73 roads completed. CAG report. Poor border infrastructure के अंदर ही लिखेंगे. Recent incidents. गलवान intrusion, Ladakh dispute, Doklam standoff. Galwan intrusion, Ladakh dispute, Doklam standoff. Schemes and initiatives. Border Management and Infrastructure Scheme. Border Management and Infrastructure Scheme. Comprehensive Integrated Border Management Scheme. Comprehensive Integrated Border Management Scheme. Border Area Development Program. Border Area Development Program. Coastal Security Scheme. Community Interaction Program. Community Interaction Program. Integrated Checkpost. Vibrant Village Program. Vibrant Village Program. Border Protection Grid. Institutional setup. Border Roads Organization BRO. Border Roads Organization MHA. Ministry of MHA. Comprehensive Integrated Border Management System. MHA. Comprehensive Integrated Border Management System CIBMS. Project Bold Kit. Border Electronically Dominated QRT Interception Techniques. Special Sensors at Border. Project Bold Quit का फुल फॉर्म है Border Electronically Dominated QRT Interception Techniques. Special Sensors at Border. Counter Terrorism and Counter Radicalization Division. Counter Terrorism and Counter Radicalization Division. Border Security Force BSF. Indo-Tibetan Border Force ITBP. सशस्त्र सीमा बल SSB. असम राइफल्स. नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग. नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग. कमीशन एंड कमिटीज़. द स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स से काटकर कमेटी. मधुकर गुप्ता कमेटी. 3 कमेटी हैं. स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स से काटकर कमेटी. मधुकर गुप्ता कमेटी. कोस्टल सिक्योरिटी मैनेजमेंट लिखेंगे. डाटा एंड फैक्ट्स ओवरव्यू. 7,516 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन. 5,422 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन ऑन द मेनलैंड. 5,422 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन ऑन द मेनलैंड. 2,094 किलोमीटर ऑन द आइलैंड बिलोंगिंग टू 9 स्टेट एंड 4 यूनियन टेरिटरीज. द कोस्ट लाइन अराउंड्स फॉर 90% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड. स्पान 3,331 कोस्टल विलेज एंड 1382 islands.
houses 12 major and 200 minor ports along with 95 landing centers. Andaman and Nicobar Island constitute just 0.2% of India's land mass. However, it provides 30% of its exclusive economic zone. Legal provision and articles. Legal provisions and articles. Coastal regulation zone. Coastal regulation zone. Recent incidents: 26/11 terror strike in Mumbai 2008. Armed robbery in Sundarbans. Armed robbery in Sundarbans 2015. Infiltration in Gujarat's Creek region 2018. Fisherman arrest in Indian Ocean, Sri Lanka 2024. Schemes and initiatives. National Committee for Strengthening Maritime and Coastal Security. Coastal security schemes. National Commercial Maritime Security Policy Document. Coastal Regulation Zones Regulations. Joint Operation Centers. तो schemes and initiatives है National Committee for Strengthening Maritime and Coastal Security Schemes, National Commercial Maritime Security Policy Document, Coastal Regulation Zones का Regulations, Joint Operation Centers. Identification of fishermen's community interaction programs, tracking of vessels and boats. Institutional setup: Indian Navy beyond 200 miles, Indian Coast Guard 12 से 200 nautical miles, Marine Police 12 nautical miles, Electronic Surveillance, Coastal Radar Chain, Automatic Identification System, Vessel Traffic Management and Information System, Automatic Identification System, Coastal Radar Chain, Coastal Security Architecture, NIA, NSG, NetGrid, Coast Guards and Marine Police, National Academy of Coastal Policing, NACP. Commission and committees: Kargil Review Committee. Organized crime. Next है organized crime. Organized crime. Types of organized crime. Drug trafficking, smuggling, counterfeiting currency, human trafficking, prostitutions, contract killing. Data and facts. Drugs. India is also among the countries with highest illicit cultivation and production of cannabis from 2010 से to 2017 UNODC 2020 की रिपोर्ट. In 2018, India topped with the largest seizure in South Asia, amounting to 266.5 tons of cannabis herb alcohol. As per the report submitted by AIMS in 2019, alcohol is the most common psychoactive substances used by Indian, followed by cannabis and opioids. Worst affected region: Northeastern India, especially Manipur. Northwest India, Northwest India, especially Punjab, followed by Mumbai and Delhi, and now Haryana. Constitutional provision: Article 23, Article 47. Legal provision: Unlawful Activities Prevention Act UAPA, the National Investigation Agency Act 2008, National Policy on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1984, National Policy on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 2014, Psychotropic Substances Act 1884, Immortal Traffic Prevention Act 1956, Foreign Exchange Regulation Act 1973, Public Gambling Act 1867, Custom Act 1962, Schemes and initiatives. Various laws under IPC and CRPC. Maharashtra Control of Organized Crime Act 1999, MOCOCA, Maharashtra Control of Organized Crime Act 1999, Unlawful Activities Prevention Act 1967, UAPA, National Security Act 1980, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. इंस्टीट्यूशनल सेटअप: नेशनल लेवल पे कौन सी इंस्टीट्यूशनल सेटअप है? डिजिटल क्रिमिनल्स केस मैनेजमेंट सिस्टम,
CCMS under NIA, Narcotics Control Bureau, CBI. इंटरनेशनल में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, UNTOC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, UNCAC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम. पुलिस रिफॉर्म्स एंड मॉडर्नाइजेशन, पुलिस रिफॉर्म्स एंड modernization. Data and facts. Strengthen of the force. Police public ratio in India stand at 152.80 per lakh person. Police public ratio in India stand at 152.80 per lakh person. India sanction strength in 192 police per lakh person. India का sanction strength in 192 police per lakh person. The UN recommended standard is 222 police per lakh persons. The constabulary constitute 86% of the state police force. Representation of women in the police force is just 11.7%. January 2022. Working hours for the civilians. Staff members of police stations have to remain on duty for 11 hours or more per day. For the civilians, staff members of police stations have to remain on duty for 11 hours or more per day. The United Nations recommended standard is 222 police per lakh person. India sanction strength is 192 police per lakh person. Legal provision: the Police Act of 1861, the National Police Commission 1977 से 1981, National Police Commission, the Ribeiro Committee 1998, the Prakash Singh Guidelines, Model Police Act 2006. Schemes, initiatives: making the police a smart force, use of body cameras, oversight committees, training on ethics and education, set up police complaint authority. आगे है कमीशन एंड कमिटीज़. गोरे कमिटी enlarge the content of police training from law and order and crime prevention to a greater sensitivity and understanding of human behavior. Enlarge the content of police training from law and order and crime prevention to a greater sensitivity and understanding of human behavior. Ribeiro Committee recommended setting up Police Performance Accountability Commission in state and the district complaint authority. पद्मना भैया Committee 2000. Standardization of recruitment procedures for the police force and training. National Police Commission NPC 1977 insulate the police from illegitimate political and bureaucratic interference. Insulate the police from illegitimate political and bureaucratic interference. Malimat Committee 2002 से 2003, a complete revamp of the entire criminal procedure system. Creation of fund to compensate victims turning hostile under pressure of culprits. Report and recommendations of second ARC. Separation of crime investigation from other police functions like maintenance of law and order. Judicial pronouncements. Prakash Singh case 2006. Constitute a state security commission so that the state government does not exercise unwarranted influence on pressure on the police. Separate the investigation and law and order function of the police. Set up a police establishment board. To decide transfer, postings, promotion and other service related matters of police. Next, indigenization and indigenous development of defense sector. Indigenization and indigenous development of defense sector. Data and facts. Status of India. India's continues to be world का largest arm importer. World's largest arm importer. Between 2019 to 2023, the country is accounted for a significant 9.8% of the total global arms import.
India has been spending around 2.4% of its GDP on defense. FDI policy allows up to 74% FDI. It is under the automatic route. Export deals with countries. Export deals with countries. Indian defense companies are now exporting to over 85 friendly foreign countries, FFCs across Africa, South Asia, Southeast Asia, and West Asia. Major defense procurement and collaboration. Major defense procurement and collaboration. India and France, Rafale fighter jets. India and Russia, BrahMos, S-400, INS Vikramaditya, MiG-29. India and USA, Howitzer guns, Chinook, Hercules, and Apache helicopters. India and Israel, Barak anti-missile defense system, Heron UAV, Falcon AWACW airborne warning and coastal system, Negev NG7 light machine guns. सेल्फ रिलायंस माई टारगेट, सेल्फ रिलायंस में के टारगेट क्या है? डिफेंस एक्सपोर्ट्स टू रिच ₹50,000 crore and annual defense production to hit ₹3 lakh crore by the 2028-2029 financial year. Self-reliance for the year 2023 to 2024, funds have been earmarked in the ratio of 68:32 between domestic and foreign procurement in the capital acquisition budget of the Ministry of Defence. Procurement policy turnover, goal of a turnover of rupees dollar 25 billion, rupees 1.75 lakh crore in defense manufacturing by 2025 तक. Export target of $5 billion, rupees 35,000 crore worth of military hardware. Procurement, a significant upward trend, 59% in 2019 से 20 and 64% in 20 से 21, increased to 68% in the current year, with 25% year marked for private industry. Employment creation, a reduction in 20 से 25% in the defense related imports could directly create an additional 1 lakh से 1,20,000 jobs. Reduction in import dependence, reduction in defense procurement from foreign sources, that is from 46% से 36% in the last 4 years. 2018 से 2022 के बीच में रिडक्शन इन इम्पोर्ट्स डिपेंडेंस, कितना से डिपेंडेंस है? रिडक्शन इन डिफेंस प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, दैट इज फ्रॉम 46 to 36% इन द लास्ट 4 years. स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, डिफेंस प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी 2016, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, IDX 2018 and IDX Prime 2022. Sprint challenges, naval innovation and indigenization organization, naval innovation and indigenization organization, defense industrial corridors, positive indigenization list, e-Bij portal, custom duty and FDI policy, institutional setup, HAL, DRDO, BHEL, NTRO, Defense Acquisition Council, Bharat Dynamics Limited, BDL. Commission and committees, Dhirendra Singh Committee, it focuses on indigenously designed, developed and manufactured weapon system. Dhirendra Singh Committee, it focuses on indigenously designed, developed and manufactured weapon system. Kargil Review Committee, comprehensive report that includes recommendation on national security. Sekatkar Committee offered suggestions for improving the fighting capability of India's 3 armed services.